A very good evening to all present here. This is Arpita from Clarinet, and I welcome you all to the UPDA Ki Pathshala. And the topic for today is Women and Diabetes. Clarinet is a digital partner of this program, and I have a small video to show. After that, we'll start with the session. So we'll take 2 minutes of your time, and then we'll start. Thank you all for watching our video. Now, I would request Dr. Sanjay Arora sir, who is the Secretary of UPDA. He is also the member of CSI and Joint Secretary API Lucknow chapter, to please start with the session. Over to you, sir. Good evening. Welcome to UPDA Ki Pathshala. We have a second session after a gap of 15 days. The brainchild of our president, Dr. Narsingh Verma, a very eminent physician and a diabetologist of India, you know very well. He's well known to everyone. And he's accompanied by our moderator, Dr. Deepak Yagnik. He's member editorial board of UPDA, a very eminent doctor from Kanpur and well known to you all. Today, the speaker will be our very own ex-president, Dr. Sarita Bajaj. Dr. Sarita Bajaj, she's DM Endocrinology from All India Institute of Medical Sciences and has got triple FRCS from London, Glasgow, and Edinburgh. Is currently Director, Professor, and Head of Department, MRN Medical College, Allahabad, Lucknow. She has been awarded with the Lifetime Achievement Award by UPDA Association, and a major contribution has been towards diabetes, obesity, and growth. Dr. Bajaj has almost 200 publications in peer-reviewed journals, monograms, and books. She has been awarded numerous orations and fellowship. In a capacity as scientific chair, she has successfully organized well-attended scientific programs from diabetes, endocrinology, and metabolic disorders, with diabetes exhibition camps, and has been involved in several nutritional diabetes projects, national diabetes projects. She is holding and has been held many prestigious board of national societies across India. She is editor-in-chief, ASI Manuals of Endocrinology, first and second edition, and on the editorial committee of several peer-reviewed journals. Dr. Sarita Bajaj has been invited as faculty as both national and international forums. Honors has been bestowed upon her in scientific and public fields for enormous publication to the medical fraternity and society in endocrine education. Today, she'll be speaking about diabetes and women. May I hand over to President Mr. Narsingh Verma for further proceedings. Thank you, Sanjay. I think we will utilize most of the time. और पूरे समय का पूरा उपयोग करने के लिए मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर सरिता बजाज, जिनका मार्गदर्शन आज मुझे मिलने वाला है, हम सभी को मिलने वाला है, वो अपनी वक्तव्य प्रारंभ करें। और उसके उपरांत मैं सभी जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो जुड़ चुके हैं और जुड़ रहे हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स पर टाइप करते रहें, जिससे कि मैडम की वक्तव्य के उपरांत उनके डिस्कशन के समय हम लोग उन प्रश्नों को ले सकें। तो आप अपने प्रश्न निसंकोच भाव से कैसे भी प्रश्न हो उनको चैट बॉक्स में टाइप करें। मैडम, आप प्रारंभ करें।
Am I visible and audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, good evening, everyone. Um, Congratulations, Dr. Narsingh Verma and Dr. Sanjay Arora. एक तो आपने मतलब आपकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है कि आपने ये यूपीडीए की पाठशाला के बारे में सोचा और उसको शुरुआत की. आई थिंक पिछले प्रोग्राम में पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूपीडीए डॉक्टर गर्ग ने बोला अब आपने हमें इनवाइट किया है, उसके लिए थैंक यू. आई एम रियली ऑनर्ड and especially this is my passion, women and diabetes. So congratulations, of course, for starting this and for inviting me. Very, very big thank you as well. तो देखिए अब मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये है कि विमेन और मेन में कोई फर्क है कि नहीं, और अगर है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं. तो पहले ये सब बातें हम हाईलाइट करेंगे कि आदमियों और औरतों में क्या क्या फर्क होता है डायबिटीज में, और उसका ट्रीटमेंट भी कुछ अलग हम कर सकते हैं या नहीं. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दैट अमंग्स द टॉप नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडियन विमेन, देखिए 66% डायबिटीज है. तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बहुत प्रोमिनेंट है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस आता है, उसके बाद कैंसर आता है, लेकिन सबसे ऊपर डायबिटीज है. तो ये स्कोप, पहले हम जब भी किसी चीज के बारे में बताते हैं तो उसमें कितनी प्रेवलेंस है वो इम्पोर्टेंट है. अब ये 2019 का डेटा है. अगर आप विमेन में देखिए तो इट इज अबाउट 22 करोड़. दिस वाज 2019. 2030 में इट विल बी 28 करोड़ एंड 2045 इट विल बी 34. तो नंबर्स तो सभी डायबिटीज के मामले में आदमियों में भी बढ़ रहे हैं, औरतों में भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. और ये पूरे वर्ल्ड ओवर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं. और 80% जो ये बढ़ेंगे नंबर्स, ये मिडिल टू लो इनकम कंट्रीज, एंड द हाईएस्ट राइज विल बी सीन इन इंडिया. ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है. अर्बन वर्सेस रूरल, मेन में तो मेन में भी प्रेवलेंस बढ़ी है और विमेन में भी प्रेवलेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ी है. और ये देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्रेवलेंस और ज्यादा बढ़ती है. उसके भी कई सारे कारण हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. तो जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं, बिल्कुल इसमें काफी फर्क है अमंगस्ट विमेन एंड मेन. उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, चाहे हम उसको एज लें, रेस, डाइट, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, इनकम एंड ज्योग्राफी. तो the prevalence of metabolic syndrome is higher in women. तो ये इन दोनों का इंटरप्ले है, चाहे हम उसको पालन पोषण कहें, नर्चर, या प्रकृति, नेचर. तो इन दोनों का ये बहुत जबरदस्त इंटरप्ले है. हमारे पास जो प्रेवलेंस डेटा है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया, द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रेवलेंस देखें तो विमेन में काफी वेरिएबल रेंज है, say 10.7 to about 55% prevalence of metabolic syndrome. और जो रिस्क फैक्टर्स हम कहते हैं, अब हम ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये कॉमन है, चाहे हम whether we take men or whether we take women. तो एज, बर्थ वेट, ओबेसिटी, inactivity,
कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, स्मोकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन। लेकिन ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये विमेन के लिए बहुत स्पेसिफिक हैं। एक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज की पेरेंटल हिस्ट्री हो। तो ये 3 बहुत स्पेसिफिक हैं, बाकी तो कॉमन है, बट अदरवाइज दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू टारगेट। देन ये भी हम थोड़ा सा इनके बारे में भी रिफर करेंगे। हार्मोनल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, साइको सोशल। सो जब हम विमेन की बात करते हैं तो ऑल दीज फैक्टर्स आल्सो हैव अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। Continuing with the differences, morbidity and mortality is higher in women. 55% of deaths occur in women. It is the 9th leading cause of death in women globally. Complications, heart disease in women, much more, 40% more risk of heart disease. And the third aspect, जो बहुत ज्यादा contribute करता है कि neglected diabetes, women neglect their own health. Basically, they neglect their own health, and of course, again, if it is diabetes, yes, that is also neglected. अब ये हमने आपको कुछ इंडियन डेटा बताया, लेकिन ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में आप देखिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो। मैंने कहा था कि मोटापा और ओबेसिटी, वजन बढ़ना, चाहे हम उसको ओवरवेट कहें, चाहे हम उसको ओबेसिटी कहें, विमेन में ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू मेन। And type 2 diabetes is also more common. ये हमारा खुद का अपना डेटा है। करीब 40,000 बच्चे थे जो करीब 5 शहरों से स्कूल्स में ये डेटा कलेक्ट किया गया था, रूरल स्कूल्स एंड अर्बन स्कूल्स। तो इलाहाबाद ने करीब 12,000 बच्चों का डेटा दिया था इसमें 40,000 में से। उसमें हमने ये देखा था कि अब्डोमिनल ओबेसिटी, एक तो हम वजन की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वेस्ट सरकमफ्रेंस। कितना वेस्ट सरकमफ्रेंस है, जिसको हम अब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, वो बहुत हानिकारक है। दैट वाज सिग्निफिकेंटली हायर इन गर्ल्स इन मेट्रोज, स्पेशली इन प्राइवेट स्कूल्स। तो ये हमारा खुद का अपना डेटा है। और ये भी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है कि जैसे 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 आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ेगा, खास तौर में ये विमेन है एज कंपेयर टू मेन, जैसे वजन बढ़ेगा तैसे तैसे आपका डायबिटीज का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। और ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद इन द पोस्टपार्टम पीरियड, अगर आप देखें जैसे जैसे वजन बढ़ता चला जाएगा तैसे डायबिटीज का चांस भी बढ़ता है। और प्रेगनेंसी के बाद बहुत तेजी से वेट बढ़ता है इन विमेन। तो वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन इन प्रेगनेंसी इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो ये सोचा गया है कि एक ये इसको कह सकते हैं एक मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग है दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये पोस्ट पार्टम पीरियड में मदर्स के लिए परसिस्ट करता है। इससे फिर मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज होती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी ज्यादा होता है। तो ये थे ये आई थिंक गांव में तो अभी भी यही सब होता है, लेकिन शहर में तो नहीं होता है। और ये है हम महिलाओं का पुराना जिम जो अब बंद हो चुका है। तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट हैं अपने किचन में, बहुत सारे हमारे पास गैजेट्स रहते हैं,
तो ये सब तो नहीं होता है। तो इनएक्टिविटी तो हर तरह से बढ़ ही रही है, भले हम उसको गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन या आईपैड्स पे लगे रहें या हम बैठ के टीवी देखें, तो इनएक्टिविटी बहुत वजह से बढ़ रही है। और ये गांव में भी है, शहर में तो है ही है। तो हम सेडेंटरी हैं, स्ट्रेस तो हम है ही हैं, तो इससे इस वजह से हम बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड डायबिटीज। और मैंने साउथ एशियन आपको डेटा अभी दिखाया, तो जो डायबिटीज का रिस्क है ये 6 से 11 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरोपियन और यूएस वुमेन। अब कुछ हमने हार्मोन्स के बारे में भी जिक्र किया। हाँ, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, और जीन एक्सप्रेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, just to give you a little bit of update about the hormonal aspect as well. कुछ interesting data है that if you have sleeping problems, you are also more likely to develop diabetes. So if you have difficulty in sleeping, if you are snoring more frequently, अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं, वजन ज्यादा होने से एक स्लीप एपनिया भी होता है। अगर आपके वर्किंग शिफ्ट्स नाइट में हैं, तो ये 4 गुना ज्यादा चांस होता है टाइप 2 डायबिटीज होने का। ये अगर ये सब हैं, और अगर केवल स्लीप कंडीशन है, 4 में से 2 हैं तो 2 गुना ज्यादा रिस्क है, और 3 है तो 3 गुना ज्यादा रिस्क है। तो 45% risk of diabetes is higher in women with sleeping difficulties than in those without. Again, very interesting data from this, again, Indian Women Health Study. करीब 2.2% women rural and 9% urban. तो जो अर्बन विमेन थी, उनका वजन, उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस, फिर अगर हम हिप सरकमफ्रेंस ले तो हम वेस्ट हिप रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उनका हीमोग्लोबिन, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, उनका कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ज्यादा थे, और उनमें हार्ट डिजीज भी ज्यादा पाई गई थी। ये बहुत पुरानी स्टडी है, लेकिन बहुत वेल एस्टैब्लिश उसने किया था कि डायबिटीज इज अ सीवी रिस्क फैक्टर। देखिए, इनमें डायबिटीज नहीं है, इनमें डायबिटीज है 2 गुना ज्यादा, ये मेन में है, और विमेन इट इज अबाउट 4 to 5 times more if they have diabetes. और जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं, वो they are higher in women with diabetes compared to women without diabetes, and अगर उनको डायबिटीज मेन के साथ भी कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। स्ट्रोक का जो चांस है वो 27% ज्यादा होता है विमेन में एज कंपेयर टू मेन। Coronary artery disease 44% greater in women as compared to men. ये जो प्रेजेंटेशन होता है, कैसे हमें पता चले कि हमें कोई हार्ट अटैक हो रहा है, कोई कॉर्नरी इवेंट हो रहा है, ये भी विमेन वर्सेस मेन, जैसे सांस फूलना ज्यादा होगा, जी मिचलाना, उल्टी होना, गैस जैसी फीलिंग हो, तो इंडाइजेशन ऐसा भी महसूस होता है, ये वुमेन में ज्यादा होता है। जबरदस्त थकान, पसीना आना, आर्म शोल्डर पेन, ये तो कॉमन है, बट ये these features are very specific for women who are presenting in the emergency department with evidence of chest pain which is suggestive of coronary artery disease. अब ये अब हम सिर्फ डायबिटीज पे फोकस कर रहे हैं, बट प्री डायबिटीज, जिसमें शुगर अभी आपकी डायबिटीज रेंज में नहीं है, जिसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं,
ये जो रिस्क है ये तभी से बढ़ना शुरू हो जाता है. तो इसी को कहते हैं that the clock starts ticking, and the clock starts ticking earlier for women in pre-diabetes as well. तो ओबेसिटी कंट्रीब्यूट करती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, फिर आता है मीनोपॉज. मीनोपॉज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है. when women lose their estrogen hormone, and there is a greater prevalence again metabolic syndrome, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, वजन हमने आपको दिखाया कि तेजी से बढ़ने लगता है पोस्टपार्टम, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस ज्यादा होता है, और सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल HDL इज लो. तो ये जो differences हैं, the sex differences for the cardiovascular risk, तो एक तो ये तीनों हैं. एक तो मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, और ये कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क प्रोफाइल है वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली इन विमेन अबव द एज ऑफ 60. मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में आपको बताया था कि ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है in women, and it is now very common these days also. That also contributes to future cardiovascular risk. So in at least in United States, they have started a so-called National Wear Red Day. ये 2019 में शुरू हुआ था. They do it on the first Friday in February each year. So on this day, the people wear red to show their support for the awareness of heart disease in women. Then when we talk of the other complications, comorbidities, कुछ physical limitations होती हैं, cognitive limitations, geriatric conditions. Compared to men with diabetes, this is much more in women with diabetes. Depression, anxiety, pregnancy मैंने अभी discuss किया था. Sexual dysfunction is also more. Even the microvascular complications, nephropathy, more in women. Amputations are less in women. Heart disease, yes, more. Stroke is more, and mortality is also more in women. And diabetes related mortality, you can see especially after menopause, ये women में ज़्यादा है as compared to men. And this applies all across, whether we talk of Middle East, North Africa, women mortality is much more. Age and sex, whichever way we look at it. And even in the European region, it is much more in women as compared to men. Now, the gender differences as far as anxiety is concerned, depression and anxiety, both are more common in women as compared to men. So we have data from New Delhi itself. So women who have been previously diagnosed less than 2 years or more than 2 years, there's a higher depression and a higher anxiety score as the disease advances. So the mental health among diabetic women living in New Delhi, there were high levels of anxiety disorder affecting almost 25% of the women. तो उसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बढ़ती हुई उम्र है, एजुकेशन कम है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज लो, और डिफिकल्टीज पोज्ड इन फाइंडिंग पार्टनर्स. Divorce is also more frequent in women with diabetes. During pregnancy also, there are a lot of fears of women in pregnancy related not only to medical health, obstetric health, nutritional health, उनके जो फैमिली से रिलेटेड है, एक स्टिग्मा भी होता है, सोशल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है,
not being accepted, they are being blamed, a lack of acceptance by the husband, fear of lack of attractiveness. There's definitely much more expense which is added, or for the child, ki bacha, we will have a pregnancy loss, with congenital malformation, need for hospitalization, in ICU perhaps, insulin requirement in childhood, and fear of diabetes in later life as well. Somehow sexual health, talking about sexual health has always been a great taboo. But I think this is one very important aspect which women should be encouraged to talk about. And of course, if there is any problem, then the appropriate advice should be given as well. Colorectal cancer, intestinal cancer, is more common in women, and the mortality rates are higher in patients with female cancer as compared to those in men, especially for the obviously sex-specific cancer of the ovary or the endometrium. Colon polyps are more common, और colon polyps होने से the risk of malignancy increases. और अगर diabetes है, obesity है, तो ये risk 2 गुना ज्यादा हो जाता है, दुगना हो जाता है. Again, कैसे ये association है insulin resistance में, hyperinsulinemia, chronic inflammation, along with diabetes. तो ये 3, insulin resistance, hyperinsulinemia, chronic inflammation, जो diabetes में होता है, इसका ज्यादा strong association है. और कई सारे carcinogens हैं, biological ovarian steroid hormones जो diabetes में होते हैं, estrogen ज्यादा, androgens, decreasing level of progesterone, ये भी सब contribute करते हैं. Hypovitaminosis D is also seen more in post-menopausal women with diabetes as compared to non-diabetics. It's almost 90% versus 63%. Women, they might need to take oral contraceptive pills that gives them a greater risk for renal disease, especially in diabetes. They have 9 times greater chances of macroalbuminuria if they are using an oral contraceptive pill. In India, malnourishment is the other. मैंने मोटापे के बारे में अभी बात की, but the other spectrum also exists. A malnourished mother. Agar if she's poorly cared for, she's not well looked after, she's poorly nourished, so small fordate babies, more metabolic syndrome, obesity and type 2 diabetes, yes, they are also becoming common among the poor, apart from the fact that they may be malnourished as well. Brain development poorer hota hai, poorer decision making, they're not able to manage chronic diseases, and more of complications as well. Women constitute more than half of the South Asian adult illiterates. Economic resources are scant, वो जल्दी hospital नहीं जाती हैं, gender discrimination बहुत ज्यादा है, और एक social taboo attached है. कोई भी बीमारी होती है तो एक stigma सा बन जाता है. And males have better access to healthcare, nutrition, and education. I think this was a very big eye-opener that diabetes kills more girls than boys in India. Agar insulin hai, so the male child will get preference over the girl child. South Asian girls के लिए again शादी बहुत मुश्किल है, society में, within the family कोई complications हो, and lack of preconception. ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि gestational diabetes, एक तो शादी late हो रही है, gestational diabetes, 1 in 6 pregnancies are being affected. तो अगर
लेट प्रेगनेंसी, अगर लेट मैरिज है तो प्रेगनेंसी के पहले ये मालूम होना चाहिए लेडीज को कि हाँ, हमें डायबिटीज की जांच करानी है। मतलब तभी भी, प्रेगनेंसी में भी कराने में भी कभी कभी बहुत देर हो जाती है, तभी पता चलता है। तो जैसे पहले से ये बात मालूम होनी चाहिए, तभी हम प्री कंसेप्शन केयर उसको फॉलो कर सकेंगे। Lack of privacy in overcrowded healthcare facilities, not well cared for, obviously. And like Amartya Sen said, gender inequality has many faces. Fear of the girls, the burden, the cost of the treatment is another very big burden. Fear of being rejected by the husband or by the in-laws, not being able to have a healthy baby, or not being able to conceive. That is the first hurdle. Anger and self-pity about not being able to lead a normal life, about the stigma, body image issues, and I've already referred to the polycystic ovarian syndrome, again, which is becoming a very, very big challenge for management. तो इसमें कई सारे specific risk factors हैं. They are biological, whether they are before menopause, some after menopause, psychological, socioeconomic factors, and there are management side effects as well. अब हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है? Women in diabetes and endocrinology, we started Wendy about a decade back. So we just wanted to have women physicians with the skills, the passion, and the commitment to mentor younger colleagues and address women health issues. Subsequently, we launched Women to Women 2 years later. And the whole concept was, if women are aware, they can be free from diabetes and its complications. The slogan was diabetes no more. So interaction, teaching women, starting as early as possible, adolescent girls, young women, pregnant women, women with diabetes, and more important, जैसे UPDA की पाठशाला आप जो कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एजुकेट करना, पब्लिक को एजुकेट करना, होम मेकर्स को एजुकेट करना. So women need to be aware, alert, and active. And then we had national site leaders, faculty, कुछ modules बनाए थे, which were being taught all across the country. When I was president of RSSTI, then we very, very actively focused on gestational diabetes and diabetes in women. And I think 2017 May, the focus of International Diabetes Federation was, the theme was, women and diabetes are right to a healthy future. So even IDF became very, very alert and active, and RSSTI joined hands with Divas, and we had programs all across the country. मैंने एक book भी publish की है, Diabetes Mellitus, Issues for the Indian Women. तो International Diabetes Federation भी हमने कहा बहुत active है, और solution क्या है? तो healthy babies. तो मैंने कहा कि मोटापा भी हानिकारक है, अगर बहुत दुबले हैं तो भी हानिकारक है. तो malnourishment, obesity, they're both harmful. So a healthy mother would have a healthy baby who would have a healthy, who would grow up to be a healthy girl, become a healthy woman, in turn a healthy mother, and a healthy baby again. So this, if this cycle can be ensured. So good health begins with good preconception care, with improved access to screening, care, and education. You educate a man, you educate a man. If you educate a woman, you educate a generation. And women are the real architects of society.
एंड जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी by the degree of progress that women have achieved. So managing diabetes in women, I've shown you as a challenge. There are many special concerns. So जितनी जल्दी हम उसको diagnose करेंगे, pre-diabetes में ideal है उसको पकड़ना, gestational diabetes को prevent करना, polycystic ovaries, PCOS को diagnose, manage करना बहुत aggressively. Goals of therapy do not change. Nutritional counseling, preferably individualized, physical activity, और जितने भी complications हैं, मैंने eyes, kidneys, bone, breast, heart, feet, सब बहुत comprehensive care program, जैसे diabetes में overall management होना चाहिए. Cardiovascular risk reduction should be aggressive. मैंने प्रेगनेंसी इश्यूज के बारे में बताया. और फॉर women the family comes first, so their own health, even diabetes health, हमेशा in their priority list will be low down. So I hope men are listening here. I hope men are also listening. So we should be the healthcare partners and their advocates. So what I've tried to show you, that diabetes in women is different, difficult, disastrous, devastating, destructive, deadly, and dismissed. In other words, neglected. So women's health is the nation's health. And जैसे Mahatma Gandhi ने कहा, that a small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. Thank you. Thank you very much. थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी तरह से आपने आज ये बताया कि कैसे डायबिटीज में भी जेंडर बायसनेस है, डायबिटीज के अंदर भी ये बायसनेस है. और मैम, मैं बहुत पहले से एक बात कहता था और मेरे मन में थी, उसका साइंटिफिक आधार बहुत ज्यादा मैं नहीं बता पाया. मैं कहता था कि जो जेंडर इनइक्वलिटी हमने प्रैक्टिस की है सालों, उसी का परिणाम है डायबिटीज. क्योंकि डायबिटीज के बच्चे को जन्म मां देती है, पिता नहीं दे सकता. इसलिए जो हमने लड़के लड़की में फर्क किया है उसकी सजा भुगत रहे हैं. उसी लिए हिंदुस्तान में डायबिटीज बढ़ रही है. मैम, पहला सवाल डॉक्टर पार्था विश्वास का है. बहुत बढ़िया सवाल पूछा है उन्होंने पूछा है, बहुत यूजफुल सवाल है कि गैप बिटवीन द सेकेंड डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन एंड द वेटिंग पीरियड फॉर कंसेप्शन. सेकेंड डोज के और कंसेप्शन के बीच का क्या गैप रखा जाए. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि कंसेप्शन को लोग प्लान करें. हमारी कंट्री की पूरी पॉपुलेशन तो एक्सीडेंटल पॉपुलेशन है, प्लान्ड है ही नहीं. मैम, इसका उत्तर चाहते हैं. इसके लिए अभी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं आया है कि कितना गैप होना चाहिए. लेकिन जैसे एंटीबॉडीज में about 4 weeks, तो 4 weeks would be a good suggestion. 4 weeks, 1 month. थैंक यू मैडम. डॉक्टर दीपक. मैडम, दूसरा सवाल जो आया है वो हमारे एक दूसरे लिसनर हैं सचिन द्विवेदी जी. इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या जेनेटिक फैक्टर है कोई ऐसा जो कि विमेन में डायबिटीज को डिफरेंट करता है? नहीं, जेनेटिक कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है. मैंने हार्मोनल, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल ये सब बताए, लेकिन जेनेटिक कोई फैक्टर नहीं. मैडम, एक सवाल मेरी तरफ से अभी है कि हम लोग सारी बातें मेनोपॉज की करते हैं. जी. Does the age of menarche also decide the future of health in women? हाँ, ये हमने अभी एक चैप्टर उसी पे लिखा है कि इसमें भी टाइप 1 डायबिटीज में है उसका रोल. जो आपने मेनार्की की एज कही, उसमें टाइप 1 डायबिटीज में आई थिंक दो बातें हैं यहाँ पे. आपका जो सवाल है कि जो मेनार्की है उसकी एज से डायबिटीज जल्दी या लेट, राइट? और दूसरा है कि मेनार्की पर सी अगर आपको डायबिटीज है तो लेट होगी या यस. इसके दो एस्पेक्ट हो गए. तो हम उसको पहला एस्पेक्ट ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो मेनार्की डिले होगी.
ठीक, तो वो तो क्लियर हो गया। अब आपका सवाल मेरे समझ में ये था कि उनको मेनार्की के टाइमिंग से डायबिटीज का कोई कॉरिलेशन है कि नहीं। कुछ उसमें डेटा था, बहुत स्मॉल ग्रुप्स में था कि हाँ, अगर मेनार्की अर्ली है तो यस, डायबिटीज टाइप 2 में यस, इट कैन बी अर्ली एज वेल इन चिल्ड्रन, जैसे जो चाइल्डहुड में देखा गया है, बिकॉज स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद टाइप 2 डायबिटीज। यस, देयर इज स्मॉल ग्रुप्स ऑफ डेटा। यस, थैंक यू मैम। डॉक्टर वर्मा। धन्यवाद मैडम। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर नबीला निशात ने। ये रेजिडेंट है हमारे केजीएमयू में। इन्होंने पूछा है कि मैडम हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा कॉमन है फीमेल्स में, हाइपोथायरॉयडिज्म का अपना रिश्ता डायबिटिक वुमेन में, इसको थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। ओके, तो ये है कि पर सी hypothyroidism, autoimmune, if it's autoimmune, yes, type 1 diabetes, autoimmune, the chances are much higher in a type 1 diabetic. So it is mandatory to look for hypothyroidism in a type 1 diabetic. In type 2 diabetes, also the prevalence of hypothyroidism is greater, and quite often more in women, again, because it's autoimmune diseases are more common in women. Hypothyroidism per se much more common after the age of 60. Almost 1 in 11 women would have hypothyroidism after the age of 60. It becomes very common. So type 1, invariably we would look for a thyroid profile. It's extremely common. Type 2, very common after the age of 60. But yes, even otherwise, hypothyroidism is more common in diabetes. मैम एक सवाल और आया है डॉक्टर सचिन से ही कि व्हाट आर द कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज इन विमेन। दूसरी ऑटोइम्यून डिसीज कौन कौन सी है, दूसरी और कौन कौन सी ऑटोइम्यून डिसीज है जो डायबिटीज रिस्क विमेन में बढ़ा देती है। जो correlation है that is much stronger with type 1 as compared to type 2. So if it's type 1, it can be any autoimmune disease, especially hypothyroidism, adrenal disease, autoimmune ovarian failure, pernicious anemia, rheumatoid arthritis, SLE, Sjogren's syndrome. Any autoimmune disorder would increase the risk of associated type 1 diabetes. Type 2 diabetes, if a patient has any disease for which the patient is on steroids, then type 2 diabetes will become, again, there are different schools of thought. Women or people who already have an underlying autoimmune disease, I've said they are very, very much more susceptible. But even if you are on steroids, you are susceptible, it just manifests early. So steroids per se would make it manifest. हम एक चीज और देखी गई है, डॉक्टर वर्मा भी मेरी बात से थोड़ा सा एग्री करेंगे कि ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड द विमेन हु हैड डायबिटीज they had a more mortality and morbidity rather than the men. Oh, you mean to say, okay. Yeah, and if they got the COVID infection. As far as सही कह रहा हूँ कुछ? हाँ, ऐसा देखने को तो मिला है, मैम बताएंगे। As far as COVID is concerned, the diabetes has the obesity, diabetes, hypertension, malignancy, hypothyroidism, chronic kidney disease,
of course, lung disease, any chronic associated disease has increased the mortality tremendously. Diabetes in women versus men. Again, I will not be able to tell you exactly why this is so, but yes, there is data which shows that the mortality was higher in women as compared to men. मैम, एक प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा है कि जो बच्चे जन्म के समय जिनका वजन कम होता है, कम भार के पैदा होते हैं, उनको डायबिटीज हो जाने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पर भी क्या जेंडर डिफरेंसेस हैं कि फीमेल बच्चा कम वजन का पैदा हुआ, मेल बच्चा कम वजन का पैदा हुआ, दोनों में किसको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है? I think you're again referring to that gender discrimination. Yeah. है ना? So obviously, I hope, I wish this was not in practice, but the male child is definitely better cared for. Because see, even this, there was a survey which was done from house to house. So if you do a survey, you go to a house, you ask the man of the house, he will come forward to answer. If you ask him, are the children well fed? If he has a girl and a boy, then he is only referring to the boy. Yes, the boy is well fed. He's not referring to the girl. So the girls will overall be less well fed as compared to the boys. So if you have a male baby and a female baby, the male baby is likely to be better looked after as compared. We still talk of female infanticide, feticide. So as far as feeding is concerned, yes, the male child will be better looked after, better nourished as compared to a female child. And I've already told you, if the female child is undernourished, then the chances of having an undernourished baby, a small foodate baby, and future diabetes are much more. मैम, एक प्रश्न एक स्टूडेंट का है, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं जिससे उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आवे कि डायबिटीज वुमेन में जो पीसीओडीज हैं वो डायबिटीज में जो कन्वर्ट होती है, इसकी मैकेनिज्म जानना चाहते हैं कि क्यों होता है ऐसा। See, polycystic ovarian syndrome, like it says, it's a syndrome. So there is no one clinical feature. There is no one single test which can help us make a diagnosis. It is a syndrome. So you have overweight, you can have hirsutism, you can have acne, you have menstrual irregularities, you can have ultrasound. You do not have to have all these features to make a diagnosis of polycystic ovarian syndrome. And we are following the Rotterdam criteria, in which we need 2 of these features. You may or may not have classical polycystic ovaries. There are several causes for polycystic ovaries over and above polycystic ovarian syndrome, which people are not well aware of. And the most important and common are hypothyroidism and hyperprolactinemia. A slightly rare one is congenital adrenal hyperplasia. So this is how you would make a diagnosis of polycystic ovarian syndrome. If we look at the hormone profile, we talk of the LH-FSH ratio, which is usually more than 3. Then a little bit of hypothyroid. So like I've said, until you exclude hypothyroidism, until you exclude hyperprolactinemia, even Cushing's, you need to do a basal cortisol test. Unless you exclude all those, you will not be able to make the diagnosis of just polycystic ovarian syndrome or PCOS. So you need to do all these tests before you make a label. They have more of insulin resistance. So it is because of the insulin resistance, the hyperinsulinemia, that they are more susceptible to diabetes. मैम, एक सवाल डॉक्टर प्रहलाद चावला का है, बहुत ही रिलेवेंट सवाल है और
it is not only for doctors or not only for the listeners, but it is for the general public as well. The most common lifestyle habit that predispose the woman for the weight gain. Oh, this is, I thought they're going to tell me and then I'm going to explain that. You mean the most, see, I said, every woman who is married yearns to become pregnant. Agreed. And I don't think the mothers, grandmothers will ever change. I mean, I'm equally a contributor. I'm one of the contributors to that as well. Apart from the inactivity, the force feeding during pregnancy and in the postpartum period, it just never goes away. So, of course, the weight gain during pregnancy, keeping your weight in mind. If you're obese, then you should have a lesser weight gain. And if you are lean, then you can put on weight. But all that weight, whatever you have gained, must be shed off within the following 6 months to a year in the postpartum period. But invariably, that does not happen. And I showed you data for that also. It just goes on skyrocketing and you continue. So it's not pre-pregnancy, it's pregnancy and the postpartum, which contribute to the bulk of the weight gain. Thank you, Dr. Verma. मैडम एक प्रश्न और है कि ये प्रश्न विटामिन डी को लेकर के है। आपने एक स्लाइड भी दिखाई थी विटामिन डी करके। इनका प्रश्न है जीडीएम में क्या विटामिन डी का कोई रोल है कि विटामिन डी डिफिशिएंट लोगों को जीडीएम ज्यादा होता है? नहीं, क्या सॉरी, मतलब अगर विटामिन डी का रोल जीडीएम में, जेस्टेशनल डायबिटीज में, उसकी मैकेनिज्म में कहीं विटामिन डी का डिफिशिएंसी भी कोई रोल अदा करती है? देखिए, जब से विटामिन डी की हम लोग करीब एक डेकेड से तो कम बात कर रहे हैं, तो Indian population, despite the so-called tropical sun, latitude, etc., we are all, majority of us are vitamin D deficient. Wherever we are, across the globe, wherever we are stationed, we are vitamin D deficient. The specific question is in the context of gestational diabetes. Even type 2 diabetes. There was a lot of data which was coming out earlier that with hypovitaminosis D is contributing to type 2 diabetes, but that was negated later. Again, this was discussed in gestational diabetes, but no, hypovitaminosis D and gestational diabetes, again, this has not been proved subsequently. इसी रिलेशन में मैम छोटा सा सवाल एक और है जो कि डॉक्टर नबीला निशात जानना चाहती हैं कि प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन वुमेन ऑफ लोअर इकोनॉमिक स्टेटस इन रिलेशन टू हायर इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ, तो मैंने रूरल अर्बन डेटा दिखाया था उसमें। हाँ, रूरल अर्बन दिखाया था। Yeah, it is lesser, but it's not there. I told you because they are malnourished. They are malnourished, but wahan bhi obesity has started going up. So we have both sides of the coin in India. Lesser, but yes, very much there, very much there. Dr. Deepak. मैम, ऐसे तो इस सवाल का जवाब आप एक बार पहले दे चुकी, फिर भी ये सवाल आ रहा है अपर्णा यादव जी से, is there any relationship between the age of conception and the gestational diabetes? Yes. Again, I'm very happy to answer this question. The later the age of conception, the sooner the gestational diabetes. Obviously, because pre-diabetes, diabetes, if you're getting married late, you'll get conceiving late. If you're see, initially, women were getting married. Of course, the age of marriage is now 18 fixed, but then if you're getting married at 14, 16, earlier, it was as soon as menarche started, women were married off. So child marriage was there. Thankfully, it is not existing any longer. But on the other side of the coin, if you're marrying in the late 20s, conceiving in your early 30s, late 30s,
yes, the chances are much, much, much more. मैम यहाँ पर एक छोटा सा मेरे मन में बात थी जो मैं कहना चाहूंगा, आपका उसमें चाहूंगा प्रतिक्रिया। पहले बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी और जब तक डायबिटीज वाली वो उम्र आए उसके पहले फैमिली कंप्लीट हो जाती। उस वजह से उस समय हम जीडीएम न पकड़ पाते हो और आज लेट मैरिज की वजह से जीडीएम का प्रेवलेंस बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो चीज हम करते ही नहीं थे हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? एक फैमिली में भी होता है ना, जैसे आपके पास जब कोई मरीज आएगा, हमारे तो कितनी पीढ़ियों में किसी को डायबिटीज नहीं था, हमें कैसे हो गया वाली जो बात है, उसका सीधा सा जवाब है कि आप जांच ही नहीं हुई। तो ये जेन्युइन है कि हम कहें कि तब तो टेस्ट ही नहीं होता था, हमें पता ही नहीं है और वो बाद में पता चलता है। लेकिन ये तो एस्टैब्लिश्ड है, जितनी भी इंडियन स्टडीज की गई हैं कि इंडिया में 10 साल, अ डेकेड अर्लियर, एवरीथिंग इज हैपनिंग एटलीस्ट अ डेकेड अर्लियर। आप खुद से देखिए, जो आपने ग्रैंडफादर्स को देखा, अपने फादर्स को देखा, आप उनके बच्चों को देख रहे हैं, और केवल इंडिया में नहीं है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 8 साल, 12 साल, 14 साल, मतलब ये जो टाइप 2 डायबिटीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये तो बच्चों में पाई जा रही है। तो ये वाकई वो, आई थिंक वो लोग तो कई सालों से जागरूक हैं। तो आई थिंक देयर इज समथिंग मोर देन दैट। मैम एक प्रश्न है कि वुमेन्स आर मोर प्रोन टू डेवलप लाडा। Women are late onset diabetes in adults. ये तो ऑटो इम्यून है, एंड ऑटो इम्यून में women definitely more susceptible. Yes, yes, the answer is a clear cut yes. Okay. Dr. Deepak. Yeah. Dr. Ajay Tiwari का एक comment है, lack of preconception counseling is the biggest cause of perinatal mortality, unplanned pregnancy are very big issue in the women with the diabetes. How can we address this issue? So during the discussion I had specially referred to that, कि today any woman of any age at the time of marriage should be counseled regarding the testing for diabetes, because diabetes is asymptomatic. So many of the patients, they just say हमें कोई लक्षण ही नहीं, कोई symptoms नहीं, हम क्यों जांच कराएं, हमें कोई तकलीफ ही नहीं। So I don't know how to, I wish diabetes would cause pain, मतलब कहीं दर्द हो तो हम कहीं जाके कुछ करा लें। So it doesn't do that. So this counseling is mandatory. All women, like I said, irrespective of age, at the time of marriage should be aware of the fact that gestational diabetes is very common. और प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले जांच करा के उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर डायबिटीज निकलती है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना है, तब हेल्दी बेबी, जो मैंने कहा हेल्दी बेबी, healthy child, healthy woman, healthy mother, healthy baby, and then that cycle will continue. That is the only way to be free of diabetes, to prevent what Dr. Verma said, the transgenerational impact. तो जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर हम डायबिटीज का ये ऑनस्लॉट है, if we want to stop it, we have to look after our girls, our women, our mothers and babies. मैम अगर इसी की बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन सी चीज एक इंडियन सिनेरियो में खासकर अभी देखी जा रही है, particularly in urban area and semi-urban area, that we used to talk women liberty and all these things, और कुछ इसका गलत फायदा उठा के जो थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी हो गई, एक स्प्रिंग एक्शन जैसा आ गया है कि स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहल हैबिट्स आर इंक्रीज मोर इन अ वुमेन देन द मैन. Does it have an effect
या जब मैंने रिस्क फैक्टर्स गिनाए थे उसमें हमने स्मोकिंग तो मेंशन किया था क्लियरली, एंड हम लोगों ने I think we published also smoking and metabolic syndrome, smoking in any form, tobacco and metabolic syndrome. हम ही लोग का एक position statement जापी में भी publish हुआ है in this context. So yes, there is a very, very strong correlation with smoking and some with alcohol as well. I agree with you entirely that these habits, then that adds to the sedentary nature, the stress. So, you know, it's multifactorial. It's multifactorial. मैम आपने प्रेजेंटेशन दिया, लोगों के तमाम प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि डॉक्टर विजय पाटनी है कलकत्ता से, उन्होंने ये लिखा है अपने कमेंट में कि 700 लोगों में उन्होंने अपनी स्टडी की है अपने सेंटर पर, उसमें जो आपने बताया है रूरल और वर्सेस अर्बन का डिफरेंस, वो उन्होंने भी पाया है रियल वर्ल्ड डाटा में। तो डॉक्टर विजय पाटनी ने अपने रियल वर्ल्ड डाटा में इस बात को पाया है जो आपने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू। अच्छे प्रश्न हैं और लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं, अब तक कमेंट और प्रश्न काफी अच्छे लोगों के रहे हैं। और कुछ अभी एक और प्रश्न है जिसका बहुत ज्यादा संबंध आज के प्रेजेंटेशन से नहीं है, लेकिन वो प्रश्न क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसको शामिल कर लूं। उन्होंने पूछा शुड बी डिक्रीज द यूज ऑफ सल्फोनिलुरिया सो दैट वी प्रिजर्व बीटा सेल। हालांकि इसका सीधा संबंध वुमेन से नहीं है, लेकिन ये प्रश्न है, कुछ उत्तर आप as देना far चाहेंगे? as beta cell failure is inevitable, और बीटा सेल फेलियर, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो सालों साल चली आ रही है। जब बीटा सेल्स फेल करने लगते हैं या करने शुरू होता है तब डायबिटीज मैनिफेस्ट करती है, ये तो बहुत वेल नोन फैक्ट है। तो सल्फोनिलुरियाज का कोई ऐसा कोई कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है। हमारी जो जनता है, मतलब कंसिडरिंग द कॉस्ट, the economic factors also, I think sulfonylureas are here to stay. They cannot be, and it will not contribute any way to the diabetes in मैंने ये women. प्रश्न इसीलिए शामिल किया था कि आपकी तरफ से मैसेज जाएगा। Absolutely. अगला प्रश्न ये है कि क्या वुमेन में जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज जनित होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जैसे कि यूटीआई या और कुछ, ये वुमेन में ज्यादा होते हैं मेल्स के तुलना में? कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आप बताना चाहेंगे? हाँ, ये जितनी भी हैं, चाहे वो नेफ्रोपैथी है, मैंने उसका भी दिया था डेटा, चाहे वो ग्लोकोमा है, whether it's urinary tract infection per se women में ज्यादा है, per se, because of the small urinary passages. Urinary tract infections are much more common in women. Diabetes है तो obviously कोई भी इन्फेक्शन है वो ज्यादा होगा, यूटीआई तो होगा ही होगा। Even neuropathy, there is data to show that neuropathy is more in women. So microvascular and macrovascular complications, both, except जो डेटा मैंने आपको दिखाया था, diabetic foot, that is more in men as compared to, perhaps because they go out more as the women stay indoors. So that could be one of the reasons. Apart from the diabetic foot, amputations, all other complications are more in women as compared to men. मैम यहाँ एक बेसिक साइंस का सवाल है कि ये आमतौर पर हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते पढ़ाते हैं और आप लोग भी मानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स में है वो प्रोटेक्टिव तरह का हार्मोन है और उसकी वजह से वो तमाम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज से बची रहती हैं। तो उसका प्रोटेक्टिव रोल डायबिटीज में क्यों नहीं या है? डायबिटीज में नहीं है, बट डायबिटीज इनडायरेक्टली कॉम्प्लिकेशंस में है, क्योंकि जो लिपिड्स हैं उन पे बहुत ज्यादा रोल। हाँ। तो अगर मेनोपॉज के बाद देखें तो एलडीएल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, एचडीएल डिक्लाइन करने लगता है, तो इनडायरेक्टली इट विल हैव अ इम्पोर्टेंट रोल एज फार एज द कॉम्प्लिकेशन और सीवी रिस्क फैक्टर इज कंसर्न्ड।
then I showed you about the contributory factor, the estrogen receptors as well. When I tried to explain as to the etiopathogenesis, why is it more in women? Why is diabetes more common in women? So that has to do with the estrogen receptors and insulin resistance. आज मैम मैं एक सवाल और आ रहा है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की प्रॉब्लम्स भी क्या विमेन में ज्यादा है डायबिटीज के साथ इन कंपैरिजन टू मेन? No, musculoskeleton is less in women as compared to men, except for periarthritis, except for frozen shoulder or periarthritis. And if overweight है तो osteoarthritis, but osteoarthritis is age related. Age related, yeah. मैम आज मैं सुबह एक किताब पढ़ रहा था, पूरी पढ़ नहीं पाया, बहुत व्यस्तता रही। वुमेन एंड डायबिटीज, ये किताब है, किसकी लिखी हुई है मैं भूल गया, मेरे पास छोटी सी किताब है, कोई दे गया था, आज मैंने उससे निकाला था कि पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो और डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर दीपक, डॉक्टर संजय बहुत देर से शांत हैं, वो कुछ पूछना चाहें, लेकिन संजय भी दिख नहीं रहे हैं। एनीवे, कोई प्रश्न अगर किसी का बचा है तो हम लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। मधुमेह के विषय में बात करते रहो, समय का पता ही नहीं चलता है, और तब भी बात पूरी नहीं होती। तो डॉक्टर संजय, आप कुछ पूछना चाहेंगे मैडम से? मैडम की इतनी अच्छी वक्तृता और इतना अच्छा लोगों का डिस्कशन, बहुत अच्छा लगा। 14 लोगों के क्वेश्चन हैं और करीब 10 कमेंट हैं, 24 लोगों के कमेंट हैं, और करीब 50 के ऊपर लोगों ने अपना इसमें अटेंडेंस की है। रजिस्ट्रेशन ज्यादा था लेकिन अटेंडेंस कम हुई। डॉक्टर संजय। Thank you very much, madam. It was a very well organized, well managed questions, both by Dr. Narsim Verma and Dr. Yagnik, and it was a wonderful interaction with everyone. All the questions received are well covered. I don't think there's anything else to discuss out here, but definitely questions की कमी तो नहीं होती, सवाल तो बहुत आते रहते हैं, but I think it's time we should wind up now. बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने व्यस्ततम समय से समय निकाला, और आप विदेश में होने के बाद भी आपका ये समय, वहां का सुबह का समय है, हम लोगों का शाम का समय है, आप जल्दी उठी और आपने हम लोगों के साथ समय बिताया। तो ये पाठशाला चलती रहेगी, और आप सभी से निवेदन है अपने अपने साथियों को बताएं, पाठशाला को और ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। जितनी बड़ी पाठशाला होगी उतना अच्छा रहेगा। सेकंड राउंड होगा तो मैडम को हम लोग फिर बुलाएंगे, और सभी लोगों को बुलाएंगे। तो इसके साथ एक प्रश्न शायद अभी और आ गया है चलते चलते, अगर वो होगा तो हम लोग उसको ले लेंगे, नहीं तो नहीं, मेरा ख्याल है वो हो चुका है प्रश्न। नहीं, एक प्रश्न और है, पार्था विश्वास ने नहीं, उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने केवल कमेंट किया है। डॉक्टर पार्था विश्वास ने कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। एक्सेलेंट डेलिब्रेशन एंड गुड एकेडमिक फीस्ट, बहुत ही अच्छा उन्होंने कमेंट किया है। तो मैम इसके साथ ही डॉक्टर दीपक आप कुछ लास्ट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। नहीं, मैम के नॉलेज का आशीर्वाद हम लोगों को शुरुआत से मिलता रहा है, सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूपी डायबिटिक एसोसिएशन। थैंक यू मैम फॉर दैट। और जो आपने आज एक जेंडर डिफरेंस की बात करी, जो कि विमेन और मेन में फर्क है डायबिटीज, तो शायद आज इस बात को लेके अब हमारे क्लिनिशियंस जो है, जब एक फीमेल डायबिटिक को देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे। और जो आपने कहा कि उनके कॉम्प्लिकेशंस रेट भी ज्यादा है, तो अब शायद उनके कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डायग्नोसिस भी हम मिलने लगेगी, एंड देन इट विल बी मैनेज मच बेटर वे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद, लोगों ने प्रतिभाग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद पाठशाला को सफल बनाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर नरसिंह वर्मा। नमस्कार। Thank you, ma'am.